are with you every step of the way. And we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रह के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. Jai Hind. Thank you so much for being the backstage. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Welcome back. Welcome back. Excuse me. Welcome back. हमने कई बच्चों की हमने कहानी सुनी, जिस वीरता से और जिस साहस से भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, उनका ढाढ़स भी हमने बढ़ाया है। और हमने ये भी उनसे अनुरोध किया है कि अपने सहभागियों से, अपने मित्रों से जरूर ये हम लोगों का संदेश पहुंचाएं कि भारत सरकार का ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी नागरिक को हम वापस सुरक्षित भारत न लाएं। हमारा यह विश्वास है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वयं यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा हुई है, भारत सरकार रूसी सरकार से भी बात कर रही है कि जल्द से जल्द, जैसे ही हमारे नागरिकों को हम जल्द से जल्द यूक्रेन से निकाल पाएं आसपास के देशों में, और वहां से हम लोग उड़ान के आधार पर, जैसे आज उड़ान भरी है भारत से और हमारे नागरिकों को सफलतापूर्वक हम लोग वापस लाए हैं, वैसे ही ये उड़ान चलती रहेगी जब तक हम आखिरी नागरिक को हम वापस न लाएं। और ये भारत सरकार की हम जिम्मेदारी समझते हैं, हमारा संकल्प समझते हैं। I would like to thank the Indian Embassy as well as Air India for taking immediate measures and getting us evacuated out of that as fast as possible. ऐसा लग रहा है कि कहीं जान को भी खतरा हो सकता है, वहाँ पर सिचुएशन क्या, हालात क्या है? मैं जहाँ पे थी वहाँ पे तो नहीं, लेकिन जो बच्चे कीव और खारकीव में हैं उनके लिए बिल्कुल जान को खतरा है। उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, वो बंकर्स में है, वहाँ पे अभी काफी ठंड है, हीटर वगैरह, उनकी जान को अभी मतलब खतरा है। But as much as I've heard कि Indian Embassy is taking all the immediate measures to get them evacuated as soon as possible. वतन लौटना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? मुश्किल था, ठंड भी थी काफी, और काफी एफर्ट्स लगाने पड़े। थोड़ी उनको प्रॉब्लम हो रही, खाने की प्रॉब्लम हो रही है। बम शेल्टर्स हैं, बम शेल्टर्स में उनको इनिशिएटिव बच्चों को निकाला है और भी आगे निकालने। हाँ, ऐसा देखते हैं, इसको कितना अप्रिशिएट करते हैं इस स्टेप को? ये बहुत अच्छी बात है इंडियन गवर्नमेंट ने। कहाँ से है सर? मध्य प्रदेश से। तो वहाँ पे हालत कैसे है? वहाँ पे सर अभी हालात तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर अब ये है कि देखते हैं क्या होता है। बहुत तो इंडियन स्टूडेंट प्रोसेस है, तो आप क्या बोलते हो उनको? इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो अब देखते हैं क्या होता है। पर अभी खारकीव तक से बच्चों को निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। क्या करता था वहाँ पे? सर वहाँ MBBS की। तो वहाँ पे कितने बच्चे हैं वहाँ पे? सर अभी हमारे नहीं भाई बताओ, कितने बच्चे और कितना बच्चे? सर अभी तो 10-15 हजार बच्चे तो होंगे ही, क्योंकि कहने की बात है कि बाहर खारकीव, ओडिशा, हर सिटी में बच्चे हैं वहाँ। कौन सी शहर से आप लोग? सर मैं चेन्नई वेस्ट सिटी से। ओके, वहाँ से कहाँ से है? वहाँ से चेन्नई वेस्ट सिटी लवी वालों। अच्छा सर, तो चेन्नई वेस्ट ये थोड़ा सेफेस्ट जोन में आता है, रोमानिया बॉर्डर आता है। अच्छा,
तो कैसे अपना बचाव किया जा रहा है? वहाँ बच्चे स्ट्रैंडेड हो रखे हैं। हाँ, बम शेल्टर्स की सारी खाने की सुविधा नहीं है। नहीं, इधर तो है, सारी सुविधाएं हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है चेन्नई सिटी में। बट बाकी जो क्या बोलते हैं आउटर सिटी खारकी हो गया, लास्ट 3 दिन से आप कहाँ कैसे रहता वहाँ पे? नहीं नॉर्मल था हमारी सिटी में, इतना वो डर का माहौल तो था, पर इतनी कोई वो वाली बात तो नहीं। बहुत बच्चे वहाँ पे पर खारकी में बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ है प्रॉब्लम, वहाँ बच्चों से बात हुई है। सभी लोग, सारे मिनिस्टर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट पूरा वहाँ से लाने ले जाने का सारा सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से। एयर इंडिया और भारत सर, टाटा सर ने बहुत अच्छा हो गया। यूनिवर्सिटीज के बच्चे उसको क्या हालात है? सर बच्चे तो डरे हुए हैं, पर इतनी अभी मतलब कि थोड़ा उम्मीद, मतलब कि ये थोड़ा रोमानिया बॉर्डर आता है हमारे 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है, तो थोड़ा सेफ है, थोड़ा सुकून सा लगता है। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। आप कहाँ पर फंसे हुए थे यूक्रेन में? किस जगह? चरनीवित्सी से वहाँ पे और कितने स्टूडेंट अभी फंसे हुए हैं? अभी ऑलमोस्ट होंगे 500 स्टूडेंट्स, 500। बट मोस्ट ऑफ देम आर इवैक्यूएटेड टू द रोमानिया। कितना मुश्किल हो रहा है वहाँ पे सर्वाइव करना इस वक्त? कुछ मुश्किल नहीं है, अभी रोमानिया की तरफ आ रही है, रशियन बॉर्डर्स पर रशियन, बट सेफ है अभी आप चरनीवित्सी लोग में। बाई बस ही आए, कुछ पैदल चलना पड़ा? खाने पीने कोई दिक्कत हुई? खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ISS और हमारी एम्बेसी ने हमें बहुत कुछ दिया खाने के लिए, और इंडियन एयरवे ने भी हमें बहुत कुछ दिया खाने के लिए। बाकी पैदल नहीं चलना पड़ा, बसेज आई हैं, बस ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ऑपरेशन गंगा के तहत जो है आप यहाँ पे आए हैं, तो किस तरह से भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कोई आपसे चार्ज नहीं लिया गया है आने का? हाँ जी, हमसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। बाकी आई प्राउड टू बी एन इंडियन, बिकॉज हमारी बसेस के ऊपर इंडियन फ्लैग्स थे, जिसकी वजह से हमें किसी भी ट्रैफिक में रुकना नहीं पड़ा। हमारी बसेस साइड से निकली है, रॉन्ग वे से या कहीं से भी, बट हमारी बसेस जल्द से जल्द हमें रोमानिया के अंदर लेके आई, और फिर रोमानिया से हम यहाँ पर आए हैं। एक आखिरी सवाल यह है कि क्या कहीं लग रहा था जान पर की खतरा हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के तमाम पार्ट्स में हमले हो रहे थे? यूक्रेन के तमाम पार्ट्स में हमले हो रहे थे, बट जैसे इंडियन एम्बेसी ने बताया था कि हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, और मैं सबसे वेस्ट में था, चरनीवित्सी में, और मैं रोमानिया बॉर्डर के पास ही था, तो वहाँ पे कोई इतना ज्यादा माहौल नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से घर वालों से बातचीत होती होगी आपकी, आप वीडियो कॉल पे बात करते होंगे, तो वो भी चिंता में होंगे? हाँ किस जी। तरह से, मतलब क्या कन्वर्सेशन? सर घर वाले सबसे ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि इंडियन न्यूज सबसे ज्यादा दिखा रही थी उस वक्त कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे, और मेरे लिए सबसे मेन था अपने घर वालों को पहले शांत करना, क्योंकि मैं तभी यहाँ पे आ सकता हूँ। फिर मैंने सबसे पहले घर वालों को ठीक महसूस कराया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पे सारे ATMs फुल हो चुके थे, भीड़ लग चुकी थी हर जगह, मॉल्स वगैरह सब, क्योंकि मार्शियल लॉ लागू हो गया था। बाकी हम जल्द से जल्द निकाल देंगे। शॉपिंग मॉल वगैरह, खाने पीने की जो दुकानें हाँ सब जी, बंद हो गई हैं? सब बंद हो गई थी लगभग, और यूक्रेनियंस कुछ बड़े बड़े मॉल्स में इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहे थे, कि क्योंकि हम इवैक्यूएट होने वाले हैं, तो वो सिर्फ यूक्रेनियंस को ही अलाउ कर रहे थे वहाँ से सामान ले जाने के लिए। आतिश नागर। अभी जिस तरीके से देखा ये जा रहा है, बताया जा रहा है कि राजस्थान वाले प्लीज आप लोग उधर चले जाओ। हाँ, हमने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स आर इन यूक्रेन नाउ। दे विल बी इवैक्यूएटेड बाय सून बाय इंडियन एम्बेसी, आई होप सो। लगता है मुझे कि इंडियन एम्बेसी उनको 7-8 दिन में इवैक्यूएट कर लेगी, पर मुझे हम सबको प्रेयर की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स देयर। वी आर फर्स्ट 2 फ्लाइट्स वे आर इवैक्यूएटेड फ्रॉम फर्स्टली, तो दैट्स व्हाई वी आर वेरी लकी। Message for government to help them that are stuck there, to mainly help them, this only. Thank you so much. Thank you for bringing them all back safely. Captain? Hello sir, how are you? Thank you so much for bringing them all down. Thank you. Thank you. Thank you. Right sir. Okay. Hi Captain, tell me your experience, because you know that the world is watching the crisis of Ukraine and Russia war, and you just evacuated students and Indian citizens and just landed at Delhi airport. What's your experience all about? So it was actually a very unfortunate event that started off between Russia and Ukraine. We were pulled out for this flight last night, and it was a short notice preparation, but it was a well coordinated effort by the airline.
the government agencies and all the involved individuals into the process, both in India and in Romania. It was definitely a special day to evacuate 250 people stranded in Ukraine who were moved into Romania by the local authorities, the government authorities, and then we were pulled upon for the task for airlifting them back to the country. It was an interesting set of people we had today. Out of the 249, I think probably 200 plus were kids aged between 20 and 25. I was surprised to see how many kids were overseas for their continued education. It was definitely special for us to lift them back into the country. Any communications between the students and you when you touch down at Romania or in Delhi? So during our stay in Bucharest, which was the airport we flew out of, we didn't really get a chance to interact with the students, but definitely during the cruise we were informed that it was a scary situation for them. The uncertainty definitely makes it a scary experience for kids as well as their parents back home. So we're glad we could complete this process in time. You have vast experience of flying. How different this aircraft operating from Delhi to Romania and Romania to Delhi as an evacuation flight? In terms of the operation, it's quite standard. It's like what we do on a day-to-day basis. Bucharest or any other airport in Romania for that matter is not a part of our route network. So it's definitely the first time we went in. We had prior briefings of how to get in and out. We did experience a bit of local military surveillance flying within Romania, which caused us to reroute about a few minutes to the left and right of the course to fly about a few miles to the west of the direction that we were supposed to travel into. Apart from that, it was quite uneventful throughout the process. Any communications between ATC, which is normal, or presses like Air India is moving towards Romania to evacuate Indians? Interestingly enough, we had quite a good support from the ATC network all the way from Romania back into India through Ankara, Tehran, even the Pakistan airspace. We were given direct routes without even asking for it. Helped us shaved off about 5 to 7 minutes of flying time through that. The flight was done at high speed during the cruise phase of the flight just to make it back as soon as we could. How challenging this flight for you? Because it was not in route. It is not in route as regular flight. Right. And when you are flying, then the fight and war is going on between Russia and Ukraine. So luckily we did not fly over any of the war zones. That would have been a different experience on its own. The routing network that we decided on, the flight planning, the entire team that worked on it, from the operation side as well as the airline side, with the coordination from the local authorities as well as the MEA authorities in place, we were supposed to fly away from the Ukrainian airspace, which we did. And finally, we could accomplish everything in a very safe and efficient manner. The government has announced that many more flights will, in the coming days, they operate. Are you interested and are you feel like, you go next time for the evacuation flight? So at Air India, we're actually a part of a very proud legacy of decades. Whenever the nation's called upon us, we've always risen to the task. So if I'm called upon for another one, I'd be happy to go. Thank you so much, sir. Even I am also. Picture with you. Come everybody. Come my group. Thank you so much. Bring them all back. Please, thank you. Taking so much. Thank you. Not at all. Okay, we just sweet of you. Come my group. Welcome. We know who's in command. Thank you so much. Congratulations. Thank you to all of you. Really done the nation proud. Thank you. That's what always Air India has Even we were feeling so proud to got this duty, do something for somebody, for the nation. And everybody was, just looking forward to see these kids, They were on the road for 7-8 hours. And it was So today, when you come in, we salute you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. God bless you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you. God bless you. Welcome back.
कोशिश करो भी टाइम कोशिश करो। Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. स्वागत है। Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome And you must have faith. Welcome back. Sir, please look this side. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Hadi. Similarly, sir, look this side. Welcome back. Thank you so much. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Man. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. चलो चलते रहो। Welcome back. Welcome back. Snacks. Welcome back. इधर से रास्ता निकलवाओ। नॉर्मल से नहीं बात कर देंगे आप।
थैंक यू सर। सबके वैक्सीनेशन सबके पास और आर्टिफिशियल में जो वैक्सीनेशन का जरूरत नहीं, साथ में एडिशनल आर्टिफिशियल के पास ना इनके पास है। राजीव सर, पूरी हो जाएंगे नहीं एक्चुअली तुम्हें बोला होगा चेक करने के लिए तो है तो दे रखा मेरे रडार पे अभी वो हेडक्वार्टर में नहीं बच्चे निकल रहे हैं। नहीं अभी तो यहाँ पे उनका ओवर स्वागत मीडिया वाला के आसपास कोई नहीं है मीडिया वाला के आसपास कोई नहीं है मतलब आप अंदर आए नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ABP न्यूज आपको रखे आगे।